Hello everyone, a very good evening and welcome back to my YouTube channel, the POWERHOUSE Ideas. आज तो लोग बहुत खुश हैं and whatever the subscribers which we have are very happy with what happened in the market because they made money ट्रक भर भर के पैसा घर ले गई हैं and many of you might be thinking कि कल तो कोई एनालिसिस दिया ही नहीं तो ये पैसा आया कहाँ से. So if you are not part of that Telegram channel, in the Telegram channel we are continuously discussing Nifty today, and many of the people were making a lot of money. Lot of money means I always tell you with that when we are on an expiry day, there are very much chances, like 70 to 80% minimum chances are there that the market will continue in one side. And if you're able to sit in that direction, you will make a hell lot of money. And that happened today. Some of the people who initially got into the wrong position also got exited from the wrong position and entered into the right position, that is the put. And everyone made a lot of money. If you're not part of that Telegram channel, that channel, you should be part of that channel. The link you will find in the description box of this video. Why I'm saying this is because if you're keen to learn, if you're keen to learn that what can happen in the market in the coming days, then you should be part of that channel. But if you want any kind of tips, if you want me to handhold you and give you any kind of trade, ke le beta trade kar le, then that's not the scenario in my channel. You should avoid joining that channel because it will be a high disappointment for you. I don't focus on any kind of tips. I don't focus on any kind of hand holding to make you cross the river. No, you have to do it after learning. Learning is the key. No one else will tell you that. And maybe this is the only reason that the growth of this channel, the growth of our group, that is the PHI, is not that fast paced. I know that. Because if I would have been giving tips, if I would have been saying that buy this without any charts, without any reasoning, then I would have been able to gather a lot of people. And another important thing is I don't believe in promotion. I do, but sometimes I do because I see people getting ditched, or sometimes I see people getting, you can say, moving in the wrong direction. So, as a concern, I do promotions, but the amount of promotions I do are very less. My objective very clear is that learning के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता. अगर आप सीखोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ोगे. चाहे वो किसी भी चीज में. It's not about trading. It's about everything. You can copy once, you can copy twice. You cannot copy forever. To be perfect in any field, be it trading or anything else, you need to learn the concepts. And concepts सीखने के लिए आप हमारे पास आ सकते हो. नहीं तो जयराम जी की we don't have anything for you. We don't have any kind of tips and everything. Now let's talk about that what we discussed in the previous video. In the previous video, which was given a day before yesterday we don't made a video. We discussed about a pattern, a similarity between the hourly time frame and the 5 minutes time frame. I told you that the patterns which are seen in the market charts gets repeated because the market is working on human psychology. The market is working on demand and supply. It's working on emotions. So the patterns tend to repeat. This is the base of technical analysis. So we saw that a kind of a pattern was forming on an hourly time frame, which was a double top pattern over here, then a lower high. This similar pattern I showed you on a 5 minute time frame. If you don't remember, you can see the previous video. I'm not going to show that again. This pattern we also spotted, similar pattern. This is a 1 hourly time frame. We also spotted this similar pattern on a 5 minute time frame, and seeing this and seeing other parameters as well. Not only this, the other technical parameters as well. We said that the market has opened the doors for 16,800. Before that, the previous day, if I remember, I told you that the chances of market staying range bound, and the market stood range bound. But then I was very clear that now the doors for 16,800 are open. Similar kind of insightful analysis, we'll do it today. Very clear, very crisp. I'll make you understand every single thing so that you understand how the chart speaks. बोलता है chart, से सुनने के लिए वो कान चाहिए. ठीक है? Now let us discuss that what is being seen on the charts from the very scratch. From the very scratch. Just tell me one thing. Just tell me one thing. You will observe. You will do the technical analysis. I'll just guide you to learn. Right? I'm not doing anything. You are doing the technical analysis over here. Just tell me one thing. What is the difference between these three areas? 1, 2, and 3. Are you able to guess it? If not, let me tell you. Just look at the slope of fall. Just look at the slope of fall over here and the congestion in the price action.
The slope of fall was high over here, the slope of fall was high over here, but over here it's kind of getting flattish. Means जो पहले इस स्पीड से गिर रहा था नीचे, अब वो इस स्पीड से नीचे गिर रहा है. Do you got the difference? So this does not mean that the market will reverse from here. No, the market is getting slower, and we need to keep this in mind. This is point number one. As you all know that I am fond of analyzing of patterns. I usually spot patterns. Okay. One interesting pattern which I can see on the chart. One interesting pattern which I can see on the chart, and if that repeats, we can see breaking of 16,800. But will that repeat? That is the question we will discuss. You can see on this day, whatever the day was, I guess it's 26 September. On this day, the market created a move like this, right? Let's correlate. The market created a move like this, closed at the bottom. The market closed at the bottom. The next day, market opened gap up. The market opened gap up. Market went down and came down. It started moving up. It already moved like this way. So are we seeing a similar kind of pattern within this range, which I've already drawn for you? Are we seeing a similar kind of pattern with this range? The answer is yes. So is there a possibility that we create this leg over here? The answer is yes, because it's not about that the pattern will repeat. It's about we are in a range. ठीक है, तो यहां से मार्केट इस एरिया से दोबारा रिजेक्शन लेके अगर नीचे आती है 16,800 से, देन 150 पॉइंट 150 पॉइंट करके फर्स्ट वी विल बी रीचिंग 16,650, देन 16,500. 150 पॉइंट करके 300 टोटल पॉइंट्स का एक फॉल हमें और देखने को मिल सकता है. But whether it's happening right now, I'm not sure. We will analyze. Okay, we are trend followers, not astrologers to predict what will be happening. We are not that intelligent to predict that this will happen after 5 days. No, I'm not. I am just a follower, and we will follow, understanding that market is supreme. दो बातें हमने कर ली. One is the slope of fall. Second is repetition of some kind of patterns. And what are these patterns? You need to question yourself. Curious होना चाहिए आपको. देखो, मार्केट ने पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट की. अब मार्केट ने सेम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे डबल टॉप रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे भी क्रिएट कर दिया. Always remember, which I keep on telling you from the very beginning, very beginning, that when market falls, it does not seize any support. I repeat, it does not seize any support, and it keeps on creating resistance. And when market rises, it does not seize any resistance, and it keeps on creating supports. So market is falling, we know that, we can see on the chart, the bias is down and market is creating resistances. So third important point, market has created a double top resistance over here. Three important points we have discussed. This will all be included in the analysis. And जो लोग वीडियो को बीच में से देखते हैं कि यार लेवल्स देख लें, फ्लैट के केस में क्या करना है, गैप अप के केस में क्या करना है, believe me, they are missing the major part of the video. That is the first few minutes of the video which are important. Rest is all crap everyone can give you. Okay, levels are everything very normal, which you can also do it. But this learning, this is how I read the chart. This is how the chart is speaking. I'm not saying it to speak, but it's something it's speaking and I'm able to hear. Right. So three important points. One is the slope. Second is the patterns, repetition of patterns. Third is the market keeps on making resistances whenever it falls. ठीक है, अब अगर हमें ऊपर जाना है पोजिशनल बेसिस पे, तो हमने बियर्स की टेरिटरी को एक बार तो क्रॉस करना है. व्हाट इज द की लेवल व्हाट इज आई सपोर्ट फॉरगेट अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस. व्हाट इज द की लेवल व्हिच यू कैन सी द नियरेस्ट? इफ यू आर सीइंग दिस, देन योर आंसर इज कंप्लीटली राइट. What are key levels? Key levels are those levels from which a good amount of rejection is seen or a good amount of movement is seen. Like somewhere over here, we had this key level. This was 17,170. Now the resistance has shifted downwards. It's somewhere around this level. Let us highlight, not talk about somewhere around. Let us see what is this key level. So the key level is 17,024 से लेके 17,040. Means 17,040 वाला area is the key level. Why? Because we see some huge movements. Forget about small areas. Forget about this. You can see after touching this level, we had this big fall. Then again, after touching this level, we have this big fall. So this is a key level. This is a major resistance. So we at least need to cross this area to dominate the bears. बुल्स का प्रेजेंस कब दिखेगा? जब वो इस एरिया को क्रॉस करेंगे. बिकॉज यहाँ पे जो बियर्स बैठे हैं, ठीक है, कुंडली कहते हैं ना, पंडित कहते हैं कुंडली बना के बैठे हैं, तो दे आर ओवर हेयर.
राहु और केतु दो जने बैठे हैं यहाँ पे, जब तक इस राहु और केतु को क्रॉस नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग पोजिशनली पॉजिटिव for short term. I'm not saying for long term because my dear, we are analyzing a 15 minute chart. 15 मिनट चार्ट पे आप छोटे टाइम का ट्रेंड पकड़ सकते हो। जितना छोटा टाइम फ्रेम उतने छोटी मूवमेंट, छोटे टाइम की मूवमेंट। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतने बड़े टाइम की मूवमेंट। दैट इज व्हाई द स्विंग ट्रेडर्स यूज डेली एंड वीकली फॉर देयर चार्ट्स। दिस इज द ओनली लॉजिक, नो अदर लॉजिक, राइट। हमने ये बात भी कर ली यहाँ पे कि दिस इज द नेक्स्ट की लेवल। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग, लेट अस गो टू द RSI. There is a kind of a bullish divergence. There is a kind, I'm not making you biased to the bullish side. There is no intention like this. We will make a plan, but I'm trying to make you understand a chart. And this area is important. I told you this is a daily time frame resistance. And छोटे मोटे time frame पे daily का level बहुत बढ़िया काम करता है. So you can see the angle, or you can see the lows have been created this kind of trend line, but the resistance trend line created over here is somewhat upward sloping, upward moving. So there is a divergence. This is also a bullish sign, but this does not again mean कि market यहाँ से ऊपर जाएगा. तो अभी तक हमने कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए, 5 पॉइंट्स ऐसे जो आप लोग रिपीट करके वीडियो के कमेंट्स में भी दे सकते हैं, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 5 पॉइंट्स वेरी क्लियरली. कमेंट करना जरूर ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और लाइक करना मत भूलो यार, कंजूसी बहुत करते हो आप लोग. आपको लाइक करने से मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम होती है, बट यू शुड लाइक, ठीक है. दैट इज द मोटिवेशन. इतनी देर से बोल रहा हूँ उसके लिए आप लाइक कर सकते हो. नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डे, नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द मार्केट. मैंने आपको हमेशा एक चीज कही है that whenever this gap happens, what is this? Market was trading. अगर मार्केट यहाँ पे बंद ना होती तो मूवमेंट किस तरह की दिखती है आपको? इस तरह की मूवमेंट दिखती है यहाँ पे. इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद, डू यू डेयर, इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद डू यू डेयर टू टेक अ सीई? मैं नहीं प्रेफर करता. द आंसर इज नो. मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली कहा था इस जगह पर कि डोंट blindly sit into a CE, let market cross above this level, this gray level. Why? Because this was a key level. You can see the fall from here. So मैंने यहाँ पे क्लियरली कहा, एंड उसके बाद मार्केट ने अपने 15 मिनट के लोस को ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, और पूरे दिन मार्केट नीचे गिरती रही. कुछ लोगों ने यहाँ पे सी बाय किया था, मेरे बहुत खास मेंबर्स हैं. आई एम नॉट डीमीनिंग एनीवन, ठीक है. मैं भी ऐसा करता था, ठीक है, अभी भी करता हूँ शायद कई बार इमोशंस में रहकर. लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे सी बाय किया, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली निकले, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया. एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट. दैट इज द बेस्ट पार्ट विच यू गिव ट्रस्ट टू लर्निंग. एंड वो उनको एक अच्छी लर्निंग मिली होगी कि यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है, इतना बड़ा गैप अप है, विल इट सस्टेन? एंड इफ इट हैज टू सस्टेन, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतना ऊपर खुला और सीधा ऊपर चले जाएगा. नहीं, वो एक बेस क्रिएट करेगा यार, एक सपोर्ट क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, फिर ऊपर जाएगा. ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है तो सपोर्ट क्रिएट करती हुई ऊपर जाती है. क्या सपोर्ट मार्केट ने क्रिएट किया? आंसर इज नो. और यहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन वील एनालाइज. अब मुझे आप एक चीज देख के बताओ, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था इस जगह पर. पूरे इस फॉल के अंदर डू यू सी दिस काइंड ऑफ पैटर्न मेकिंग? नो. तो व्हाट इज दिस? द मार्केट हैज चेंज्ड द ट्रेंड, जो यहाँ पे था और जो यहाँ पे है. दिस इज ऑल्सो सेवेंथ साइन which I can see on the chart, which shows that there is some positivity, but the trend is down. So we need to very cautiously trade on the bull side, right? अब हम बात करते हैं जल्दी से, 5 मिनट और, लास्ट 5 मिनट्स, द लीस्ट इंपॉर्टेंट मिनट्स, वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ टू ट्रेड दिस चार्ट टुमारो. क्या हम सीई लें, क्या हम पीई लें, हम ये डिस्कस करेंगे. अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, मींस लेट मी टेल यू, समवेयर अराउंड दिस एरिया मार्केट खुलती है, तो हमें पता है कि मार्केट ने यहाँ से गिरने के बाद एक ऐसा एक बेस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक कोशिश कर चुकी है और फेल हो गई है. मतलब यहाँ से फिर से वो फेल हो सकती है. अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे सपोर्ट भी थी, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मैं इमीडिएटली पुट या कॉल दोनों को अवॉइड करूंगा. नीचे 16,800 का लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चैनल फॉर्म कर रही है मार्केट, जो मैंने आपको 15 मिनट में भी दिखाया, आप पीछे वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो. नीचे एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट है जो चैनल फॉर्म कर रही है. तो पुट तो लेने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. क्या मैं कॉल लेने में इंटरेस्टेड हूँ? आंसर इज नो. अभी के लिए नहीं, बिकॉज हमारा बायस डाउन है. अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद इस एरिया को क्रॉस करती है,
और इस एरिया को भी क्रॉस करती है, बिकॉज एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक ही मेजर की लेवल यहाँ पे भी है, जहां से ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मार्केट गिर गई। अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करती है, दिस इज एरिया ऑफ, लेट अस सी, 16,920, 16,920 को क्रॉस करती है, तो हम एक रिस्की रिस्की कॉल में बैठ सकते हैं, कॉल ऑप्शन में बैठ सकते हैं। बाय रिस्की बिकॉज वी आर हैविंग अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एज वेल, बट एज पर माई एक्सपीरियंस ट्रेंड लाइन्स डोंट होल्ड दैट मच इंपॉर्टेंस। जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, दैट आर मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस करती है फ्लैट खुलने के बाद, एंड फ्लैट ऐसे नहीं कि ऊपर सीधी चली जाए, फिर एक पैराबोलिक मूव हो जाएगी। ऊपर खुली, थोड़ा सा यहाँ पे इसको मुश्किल होगी, बिकॉज यहाँ पहले भी उसको मुश्किल हुई है, थोड़ी सी मुश्किल हो, फिर ऊपर जाए यहाँ पर, तो हम ले सकते हैं। उससे आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का भी जैसा सिनारियो मिल जाएगा। अगर कंफर्टेबली मार्केट इस एरिया को, ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर लेती है, तो ये एरिया हमारा टारगेट होगा, दिस डबल टॉप एरिया। व्हाट इज दिस डबल टॉप एरिया? दिस डबल टॉप एरिया इज 17,020 तक लेके, यू कैन टारगेट 17,000। तो 100 पॉइंट की मूव हमें यहाँ पे इजीली मिल सकती है। दिस इज फ्लैट ओपनिंग। पुट में हम कुछ नहीं करने वाले। पुट के लिए मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है, जस्ट वेट अ मिनट। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, सेम सिनारियो गाइस, सेम सिनारियो, मार्केट यहाँ गैप खुल गई, एक विजुअल लाइन आपने ड्रॉ की कि मार्केट सीधा ऊपर आई, एकदम से ऊपर नहीं जाएगी, और अगर जा रही है तो लेट इट गो, ठीक है। ऐसी पैराबोलिक मूव हमेशा हम पकड़ नहीं सकते हैं। अगर ऐसी पैराबोलिक मूव हर कोई हम पकड़ने लग गए हर बार विद कंसिस्टेंसी, तो हम सब लोग करोड़पति हो जाएंगे, और हम सब लोग तो नहीं हो सकते ना, कुछ लोग ही हो सकते हैं, ठीक है। एंड आई वांट एवरीवन ऑफ यू डू बी, बट इस तरह से नहीं चलती है मार्केट। तो अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुली, तो एक इमेजिनरी रन अप, सेम सिनारियो, सेम सिनारियो, कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे इस एरिया को ब्रेक करने में पहले, जो मैंने आपको बताया, बिकॉज यहाँ से एक मेजर डाउनफॉल था। फिर अगर इसको ब्रेक करता है, टारगेट विल अगेन रिमेन द सेम। छोटे टारगेट रखेंगे, बिकॉज मार्केट गिर रही है, गिरती हुई मार्केट में हम अपना रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ गैप अप और यू कैन से फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट गैप अप खुलती ही बहुत ज्यादा बड़ी है यहाँ तक, ठीक है, तो मैं अवॉइड करूंगा मार्केट को, बिकॉज मार्केट ने एक अच्छे बेस से इतना बड़ा मोमेंटम दिखाया। यू कैन से ओवर हेयर ऑल्सो, मार्केट यहाँ पे क्लोज आई, तो इतना बड़ा गैप अप होने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे बुल्स बैठे हैं। फिर से अगर इतना बड़ा गैप अप हो जाता तो मैं अवॉइड करूंगा, बिकॉज वी डोंट नो, वी हैव टू अगेन सी द प्राइस एक्शन। क्या इस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे? अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बन के फिर से ब्रेक डाउन होगा, तब हम पुट की सोचेंगे, नहीं तो अवॉइड। और इस तरह का प्राइस एक्शन बन के ही हम कॉल की सोचेंगे, अगर ब्रेकआउट होता तो, ये तो टोटली अवॉइड, ठीक है। फिर मार्केट जहां मर्जी जाए, फर्क नहीं पड़ता, आज बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, उसको बचा के रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे जाती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे चली जाती है, रिमेंबर दिस पैटर्न टुमारो, रिमेंबर दिस पैटर्न, बिकॉज इतनी बड़ी सपोर्ट, डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट ऐसे ही नहीं टूटने वाली है, ठीक है। यहाँ पे लड़ाई होगी, बहुत अच्छे से लड़ाई होगी, और अगर एकदम नीचे जाएगी तो हम नहीं पकड़ सकते। हम वेट करेंगे इस लड़ाई की, इस जगह पर, मतलब प्राइस वापस ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसकी वेट करेंगे। और तब जब एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन आता है, तब लेना है हमने, बिकॉज गाइज रिमेंबर दिस इज द डेली सपोर्ट एंड वी आर ट्रेडिंग ऑन 5 मिनट्स। तो छोटे टाइम फ्रेम में जब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो डेली की सिग्निफिकेंस यू वेरी वेल कैन इमेजिन। आप इतने तो होशियार हैं कि आप समझ सकते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो दिस वाज अ डिटेल्ड एनालिसिस on Nifty 50. I hope one thing each and one of you must have learned, whether it's about price action, whether it's about patterns, whether it's about seeing strength, whether it's about seeing the slope of patterns, everything, whether it's about how to trade the bulls and the bear dominance areas, everything which I have covered in this single piece video. And still I don't get likes, still I don't get comments, but that's okay, because we need to spread out positive vibes into this universe, then only it will come back to you. I'll see you guys in the next video. Till the time, take care, bye bye, Jai Hind.